कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरि मौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी देवकी परमानन्दं परमानन्दम् कृष्णं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं जगद्गुरुम् कृष्णं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्देवो महेश्वरः महेश्वरः गुरु गुरु साक्षात् साक्षात् परब्रह्म परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे श्रीगुरुवे नमः नमः तस्मै तस्मै श्री गुरुवे श्रीगुरुवे नमः. We are reading from Srimad Bhagavad Mahapuran, and now we are in Canto 10. We have learned many pastimes of Sri Krishna, the childhood Leelas prominently. Now we shall be exploring the, the adolescent years of Sri Krishna. The one Leela that we have already covered is the stealing of the garments, the Vastraharan, and what we understand that Bhagavad is all about enhancing our devotion to the Lord, who is the Supreme Person. Sometimes we may compare, oh, Sri Ram has all these qualities, is Maryada Purushottam. He does everything according to the books. But Sri Krishna's Leelas are very mischievous, so much of crookedness. He is called Tribangi Lal. He does not stand straight. His head is bent, his waist is bent, his feet are slanted. So, why is this that Sri Krishna is so different than Sri Ram? The fact is, both are the avatars of the Lord, and in fact, Sri Krishna is God Himself, Sri Ram is God Himself in the avatari form. As we understood, if we go back into the hierarchy, we check our ancestry and we reach Manuji. Manuji's father is Brahmaji. Brahmaji emerged from Lord Vishnu. Lord Vishnu is the expansion of Chaturvyu. Chaturvyu is the expansion of Sankarshan. Sankarshan is the expansion of Sri Krishna. But beyond Sri Krishna, is there anyone? No. So that is why Sri Krishna is called Avatari. Means every other form is the descension of Sri Krishna, the expansion of Sri Krishna. And that is why we say that only once in a day of Brahmaji, Sri Krishna appears in the full form. So, what is the difference? In one day of Brahmaji, there are 14 Manvantars. Manvantar is the duration in which Manu changes. That means in one day of Brahmaji, 14 times Manu will change. So once the creation begins in the first day of Brahma, because at the end of the day, the universe is partially dissolved. The Prithvi Lok, Swarg Lok, all these are dissolved. And the souls go back into the Mahodar of
Vishnu form. And they emerge again when the recreation happens, when the night is over. So this day is 4.32 billion years. And if we break that into 14 manvantars, each manvantar is 30 crores 68 lakhs 20,000 years. Imagine one manvantar is 30 crores 68 lakhs 20,000 years. In terms of millions, it's about 307 million human years. And there are 14 such manvantars like this. So in our present Brahmand, in the present universe, creation first began in the first manvantar on the very first day, and that is the manvantar of Swayambhu Manu. And in the descension of Swayambhu Manu, we had Devhuti, Akuti, Prasuti, Uttanpad, Priyavrat as the five sons. And Brahmaji's sons are Marichi, Pulastya, Pulaha, Kratu, Brigu, Narad, Rudra, Sanat Sanatan, Sanak Sanandan Kumar. Marichi's son Kashyap is married to the daughter of Daksh Prajapati, and 13 daughters of Daksh Prajapati are married to Kashyap Rishi. So most of the creation that we see today are the descendants of the combination of Kashyap Rishi and the daughters of Daksh Prajapati. So we should remember this structure, and we should also know the geography, that there is Prithvi Lok, and then there is Bhuvar Lok, and Swarg Lok, and Mahalok, and Janalok, and Tapalok, and below Sutal, Atal, Vital, Talatal, Rasatal, Patal, etc. So this entire perspective gives us the divine arrangement of the Lord's creation. And then we find that what are we supposed to do? So the answer is unique. We are supposed to enhance our bhakti to the lotus feet of the Lord. Like how the Braj gopis were so fond of Sri Krishna that all the time they are thinking about Sri Krishna. They are expert homemakers, they are expert cooks, they are expert in preparing the milk products. So in the morning they churn the dahi, the curd, dahi manthan. But what are they doing? Alongside the dahi manthan, they are singing the glories of the Lord. Shri Krishna Govinda Hare Murare, He Nath Narad, He Nath Narayan Vasudeva. So when Uddhav ji arrives in Braj, Shri Krishna has sent him. He has come to deliver knowledge, but he sees bhakti is so prominent. There is so much of singing going on, and everyone is crying in the separation of Sri Krishna. So much so that from every house there is a stream of tears. It has made a drain. A small stream of tears has made the channel of water, tears, which is coming and diverging into Yamuna river. So from every house there is a stream of tears because the Brajvasis are crying. And Nanda Maharaj and Yashoda, they cry so much that the tear stream is really big. And then Uddhav ji meets the gopis, and the gopis listen to Uddhav ji, who is a great scholar. He is a Jnani. Jnani means they worship Brahma, the formless God. And
Krishna had told him, Uddhav ji, you are such a jnani, please go and give your knowledge to the gopis. So Uddhav ji starts explaining the Brahma Gyan to gopis. Gopis listen to Uddhav ji with great attention. And then Uddhav ji is feeling very happy that these people have heard me so attentively. But when he stops, the gopi says, "O Uddhav ji, you are saying that you are Brahm, I am Brahm, she is Brahm, he is Brahm, the tree is Brahm, the cow is Brahm, the mountain is Brahm, there is Brahm everywhere, and everyone is Brahm. So if everyone is Brahm, which Brahm is imparting knowledge to which Brahm? Because all are Brahm, so why should one Brahm impart knowledge to another?" Uddhavji had never thought about it, and he is not knowing how to answer the gopis. The second gopi says, Uddhavji, you don't have to answer, but please tell us that you are saying, contemplate with your mind the Brahma, the formless God. But our mind is material, and the Brahma which you are talking about is spiritual. So, how the material Prakrit mind will contemplate on the spiritual Brahma? Again, Uddhavji does not have an answer. And the third gopi says, Uddhavji, you don't have to answer it immediately. Please tell me one more point, that you are saying that we have only one mind, everyone has only one mind. And to contemplate with that mind on the form of Brahm, on the formless Brahm, but how to contemplate on the formless Brahm, because we have already given our mind to Sri Krishna. So mind is only one. And then they sing, Uddhav ji man na hue das bees. Uddhav ji man na hue das bees. Ekahu tejo gayo श्याम संग काउ अवराधे ईश. Uddhav ji man na hue das bees. We don't have 10, 20 minds. We have only one mind, and that mind is given to Sri Krishna. And Uddhavji, you say we are missing Sri Krishna, but actually we are seeing Sri Krishna everywhere. Do you see Sri Krishna in the bush, in the stream? Uddhavji tries to figure out. He cannot see. See, there is Krishna under the Kadamba tree. There is Krishna in the river bank, on the river bank. There is Krishna in those bushes, in that house, on the door, near the window. बातन में वाटन में बीथिन में बेलिन में बागन में बेलिन में भूषण में वन में दरन में दीवारन में देहरी दरीचन में हारन में हीरन में भूषण में वन में गायन में गोपिन में गोकुल में गुंजन में जहां जहां देखूं तहां श्याम ही दिखाई देत मेरो श्याम छाए रहियो नैनन में मन में. This is the level of love we all are attempting to achieve as per our Gurudev's instruction to learn from the gopis how to love the divine. They are so much attached to Sri Krishna that they are struggling to detach their mind from Sri Krishna. The mother-in-laws are shouting at them, see, you made the mistake, you did not cook this vegetable properly. So they are making mistakes because the mind is so much absorbed in Sri Krishna. So they are telling, oh Krishna, please go out of my mind. Look at their conditions.
So Srimad Bhagavat Mahapuran is the foundation for the divine love, and it is very important that we understand this point, that we have to develop our divine love for Sri Krishna, attachment to Sri Krishna, attachment to Hari Guru. Then only our endeavor in the learning of Bhagavat Mahapuran is really fruitful. Like Shri Maharaj Ji has summed up in Bhakti Shatak, 100 बातन की बात एक धरहूं मुरलीधर ध्यान, राधे राधे बरहूं सेवा वासना, 100 ज्ञानन की ज्ञान, राधे राधे। 100 बातन की बात एक धरहूं मुरलीधर ध्यान। Out of 100 pieces of knowledge, the most important piece of knowledge is to attach our mind to Muralidhar Sri Krishna. Baravahu seva bhavana, and enhance the bhakti, the desire to serve Sri Krishna. Do everything that pleases Sri Krishna. That is the ultimate pinnacle of knowledge. With that background, now we shall read today's chapter, but before that, we will sing a bhajan. Today's bhajan is Charan Kamal Raj Kije Radhe Mohi. Charan Kamal Raj Kije Radhe Mohi. Charan Kamal Raj Kije Radhe Mohi. One of you wants to read the English translation before we sing? I can do it, Bhaiya. Okay. Yes, please. O Radhe, please make me the dust of your lotus feet. When you are annoyed with beloved Shyam Sundar and he cries putting his head on your feet, then I wish to have a chance to be wet with his holy tears. I wish to be your foot dust, which could not be obtained by Mahalakshmi, even after practicing millions of severe austerities. I wish to be the foot dust of your lotus feet, for the attainment of which even the Creator Brahma asks for a boon. You are causelessly merciful, so please listen to my prayer. Shri Kripaluji Maharaj says, according to a phrase, it is only when a blind gets eyes, only then he believes. The implication is that to prove the authenticity of your epithet of causeless, merciful, make me the dust of your lotus feet. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Thank Beautiful picture, Bhaiya. you. Beautiful. Charana Kamal Raj Kije Radhe Mohi. Charana Kamal Raj Kije Radhe Mohi. तुवमानी निहित पिय त्रिगजल सो तुवमानी निहित पिय त्रिगजल सो जापद रज नित भीजे राधे मोही जापद रज नित भीजे राधे मोही चरण कमल रज कीजे राधे मोही चरण कमल रज की जय। जा पावन
जा पावन पद रज पावन को कमलाहु करमी जय राधे मोही कमलाहु करमी जय राधे मोही चरण कमल रज की जय जेहि लगी विधि वरदान मांगी कह जेहि लगी विधि वरदान मांगी कह नाथ सोई रज दीजै राधे मोही नाथ सोई रज दीजै राधे मोही न कमल रज की जय बीनु कारण करुणाकारिणी तुम बीनु कारण करुणाकारिणी तुम मम पुकार सुनी लीजे मम पुकार सुनी लीजे चरण कमल रज की जय चरण कमल रज की जय अंध कृपालो पैदृग जब ही अंध कृपालो पैदृग जब ही तब ही सही पति जय राधे मोही तब ही सही पति जय राधे मोही चरण कमल कर की जय राधे मोही चरण कमल रज की जय राधे मोही राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे चरण कमल रज की जय रज की जय रज की जय बोलिए श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय श्रीमद युगल सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे Our koti koti pranam to the lotus feet of Sri Hari and Sri Guru. Our koti koti pranam to Swami Mukundanand ji. My humble pranam to each one of you. And now we shall read from
the chapter 23 from Canto 10, and this is about Brahma's wives liberated. Brahman's wives liberated. So let us read on. Number one, Sukhdev ji continues while the cowherd boys roamed in the forest, they felt very hungry and requested Balram and Krishna. O brave warrior, O dear Shamsundar, you have subdued many evils, and this hunger is also tormenting us like evil. Please arrange to subdue it too. The Supreme Krishna used this opportunity to grace some of his devotees who were in the form of Brahmins' wives. Told his friends, dear friends, in a nearby village, some priests, Brahmins, are reciting the Vedas, performing Angira sacrifice yagya for getting heaven after death. You all, my friends, approach them and tell them that Krishna and Balram and Balram need some food and get it. Always ready to follow the Lord's command, the boys approached the priests at the Yagya grounds and offering Dandavat pranams to the priests, humbly informed them the purpose of their visit, saying to the priests, saying, O Bhumi Devas, Lord of Earth, we are servants of Krishna and have come with a request following the order of our lords Krishna and Balram. Both of them, after herding the cattle for grazing, are in a nearby forest and now are famished. They desire some rice to curb their hunger if it pleases you, O knowers of Dharma and Vedas. Despite the wise boys highlighting this pious act, the priest did not pay heed to them and continued with their yagya, wanting the heavenly abodes instead. So, very famous episode that these priests they have memorized so many mantras, they are chanting, but what is it that they want? They want place in the heavenly abodes. They have no knowledge of what Sri Krishna has said. Pune chinye martya lokam vishanti. That heavenly abodes are only a temporary place, and moreover, you cannot perform karma. So the devatas are actually praying to come back into the human form, and these priests are wanting the celestial abodes, the Swargalok, for the material gratification. So let's move on to the next slide. After that, I'll hand over. In fact, O Parikshit, the place, time, ingredients, various mantras, rituals, and procedures, the priest, the Yajman, Agni, Devatas, the Yagya, and the results all are manifestations of the same Lord Himself. Treating the same Lord as an ordinary human being, the priests continued with their Yagya, ignoring the Gopas, seeing the priests silent and non committal, the boys were hugely disappointed and returned back and told all that happened to Krishna and Balram. Sri Krishna was totally amused and said, Oh boys, do not get disappointed. Success and failure are always part of life. Persevering with consistent efforts and faith will get success. So now you will approach the wives of the priests and inform them Shankarsan and Shyam have arrived, and then they will give all food as per your asking, as they are my devotees and always engrossed in me. The Gopas now approached the Dvij Patnis in their room, who were all prettily decked and dressed up for the occasion. Bowing to them, the boys politely said, Our pranams to you, O ladies. Please listen to our request. Lord Krishna, who has come nearby, has asked us to approach you. He, with his brother Balram and other boys, are very hungry. After grazing the cattle, having come a long way from our home, and so are wanting food from you. The Dvij Patnis, who had heard of all the Lord's Leelas and activities all this time, now getting an opportunity to see him, got up in a flurry to take a darshan of their Lord who had come so close to them. Very interesting episode. The Brahmins, they are the performers of the yajna. They have nothing to do with the devotion.
whereas their wives are great devotees of the Lord. So let us see what happens in the next. So over to Shilaji and Hemangni ji. Number 5. The ladies carry delicious, wholesome food of 4 types. 1. Bhakshya food that can be easily gulped like porridge. 2. Bhojya food that has to be chewed. 3. Lehanam food that is licked, example chutney. 4. Joshya food that is sucked, example orange sugarcane packed in 4 vessels. They ignored the restraints, the warnings, scoldings of their husbands, sons, brothers, and the other material relations, fixing their mind on the Lord, of whom they had heard innumerable glories. The wives proceeded to the grove to sight their beloved Krishna. Then they saw the divine Lord on the bank of the Yamuna, roaming in the forest full of ashok trees, surrounded by the cowherd boys and Balram. Seeing the blue form of Lord, dressed in yellow, wearing a vanmala, peacock feather, and casually resting one arm on the shoulder of a devoted cowherd, and swinging a lotus in the other with his smiling lotus-like face and curly locks on his cheeks, they captured the image in their hearts and then embraced him, finally ending their agony of separation from him, similar to how egoistic men shake off their ego with an embrace of an enlightened soul. Sri Krishna, who knew that these ladies had forsaken their role and come against the will of their relations, told them, "My welcome to you, ladies. Please get comfortable and be seated. What can we do for you?" Radhe Radhe. So here the food types are described in Bhagavad Gita in the chapter 15, shloka number 14. The Lord says, Aham Vaishwanaro Bhutva Praninam Dehamaashritah Pranapan Samayuktah Pachami Anyam Chaturvidham. The Lord is saying, I am the fire in your stomach. The fire of digestion is called Vaishwana. And that fire digests the food. And Shri Krishna says this food is digested by the combination of Pran Vayu and Apan Vayu and the Vaishwanar fire, which I am. And then the digestion takes place for the 4 types of food that you consume. When I first came to know about this shlok, I was very amused that our food only 4 types and it fits so well. There are only 4 types of food: Bhakshya, Bhojya, Lehya, Choshya. Some food you can only lick. There is no way to eat it otherwise. That is called lehya, chutney, honey. These are the foods that can only be sucked, can only be, licked. And there is one type of food which can only be sucked. There is no other way to eat it, to consume it, like the sugar cane. Sugar cane can only be sucked. There is no other way the food sugar cane can be consumed. And the third is the one which requires chewing. Unless you chew, you cannot eat it. That is called bhojya. You have to masticate the food and then only you can eat. And there is another food which there is no other way to eat than to just gulp it down like the liquid. So these 4 categories of food have been prepared by these ladies. And also you would have heard about the shatras. There are 6 types of taste: pungent, sour, sweet, etc., salty. When you make a palate food plate which is full of these satras, that food is supposed to be the best because all different types of tastes are available. So let us see what happens when Sri Krishna speaks to these ladies. Shall I carry on, or does Hema Didi You can speak read. us? You can read this one, and next Hema Didi Okay, can read. fine. Yeah. Okay. As you have always loved me as your own,
It is but proper that you have come to see me. And now that you have seen me, you all should feed. You all should Worship the feet worship, and okay, feed, and to okay. your husbands who are Brahman, are whole householders. To conclude their yajna successfully, the Brahmin wives prayed, O Almighty Lord, such harsh words should not come from you. Now is the time for you to prove that Nasa Punar Vartate. Bhartate. On attaining me, one does not return. Rejecting all our relations, we seek the soles of your feet and get the discarded tulsi leaf fallen from your lotus feet. Our material close relatives will no longer accept us. O Supreme Lord, we have nowhere to go. Hence, your lotus feet remain our only solace and abode. To this, the Lord replies, O Dwij Patnis, my physical proximity is not necessarily going to increase your devotion, nor is it going to be liked by the worldly people. Having accepted your devotion, I grace you that your relations will not be angry with you anymore. And even the devtas presiding over the yajna too, they approve of you. So go back, ladies, continue meditating on me, and you will realize me. Thus assured, the wives returned back and with their Brahmin husbands successfully concluded the yajna. O Parikshit, one of the ladies who had been forcefully held back by her husband and could not meet Sri Krishna, continued meditating on the Lord with the result that she dropped her physical body, mentally embracing the Lord due to her past karmas. Thank you, Radhe Radhe. Right. So beautiful conversation where Shri Krishna advises such wonderful words that please return home and serve your husbands and also keep meditating on me. That is Karmi Yoga. And O Parikshit, one of the ladies who had been forcibly held back by her husband and could not meet Sri Krishna, continued meditating with the result that she dropped her physical body, mentally embracing the Lord due to her past karmas. So even Wow. though she was not allowed to come in mental state, she has reached Sri Krishna. That's what it says. And now let us move on to the next slide. Slide number 9. Krishna first distributed the 4 types of food amongst the Gopas, and only then did he have it. Thus, imitating and behaving like normal mortal, Sri Krishna, delighting the Gopas and Gopis, carried on his leelas in Braj. Meanwhile, the priest, Brahmins, seeing the devotion of their wives, now realized they had actually committed an offense against Sri Krishna and Balram, taking them to be a mere mortal. Regarding their act, they condemned themselves, saying, Fie upon us, thrice born, first as Brahmin, second with the thread ceremony, and third by conducting the yajnas, assuming ourselves as scholars of Vedas. Fie upon our so called versatile knowledge, fie upon our privilege, fie upon our expertise in rituals, which has not helped us in recognizing Sri Krishna as the Supreme Lord who is above sense perception. 10. Coming under the Lord's Maya, even as teachers, don't know our real welfare. So blessed are the wives who, with their devotion, have cut asunder the bondage of material life. These Devis, ladies, neither had the thread ceremony nor learnt the Vedas from an acharya, nor do they perform austerities or inquire about the self and lead a simple life without any great virtuous deeds, while we do. They have still gained pure, simple, unwavering devotion to Sri Krishna, while we are not graced with the same.
identifying with our mortal body. The Supreme Lord thought cowherd, cowherd boys has now awakened us to our real self-interest, lost as lost as were in our grihasti life. What would the Lord then desire from us? He who does not require anything, therefore, only as a Leela, that the Lord has actually chosen us to grace us to realize true knowledge. Radhe Radhe, thank you. Beautiful picture. Radhe Radhe. So we find in this slide the Brahmins, they have realized what they were doing, and they are so grateful to their wives who have become the instrument for the real knowledge to descend on them. And as the 10th point says, coming under the Lord's Maya, we, even as teachers, don't know our own real welfare. So blessed are our wives who, with their devotion, have cut asunder the bondage of material life. So we see the importance of bhakti, the efficacy of bhakti, which is the supreme dharma. That is why in Bhagavad Gita, the Lord says, Sarva dharman parityajya. If we have adopted bhakti marg, there is no need mandatorily to perform any rituals. Although for a good, conduct in the day-to-day life, we may have to do some rituals, but that is not the mandatory requirement. Now let's move on to the next slide. I'll So, continue. yeah, okay. Number 11. When the goddess of fortune, wealth, prosperity, Mata Mahalakshmi herself constantly seeks to serve the Lord and is ever ready to fulfill any of his desires. Still, the Lord, asking for boiled rice from ordinary mortals like us, is beyond comprehension, which is just a divine pretense of the Lord. We learned and knew that the place, time, ingredients, various mantras, rituals, and procedures, the priest, the Yajmans, Agni, Devtas invoked Yagna's itself, and the result, all the manifestation of the Lord, and also that the same Lord is now born as Sri Krishna in the Yaduvanshi. Still, we as ignorant fools could not recognize him. We are still fortunate and blessed to have the Lord's devotees as our wives, and through them, now even more minds is getting fixed on Sri Hari. Radhe Radhe, thank you. Radhe Radhe. So, very beautifully, the conclusion that the Brahmins have also realized that the place, time, ingredients, various mantras, rituals, and procedures, the priest, the Yajman, Agni Devatas, and the results are all manifestations of the Lord, and also that the same Lord is now born as Sri Krishna in the Yaduvanshi. They realize that, and then they have repented, and let's see what happens next. So let me just complete this. Verse 10, 23, 50, 51. तस्मै नमो भगवते कृष्णया कुण्ठमेधसे यन्माया मोहितधियो यन्मायां भ्राममः कर्मवर्त्मसु. Translation: Hail to you, the Almighty Lord Shri Krishna, whose intellect knows no obstruction. It is only because our judgment has been clouded by your Maya deluding potency that we are wandering in the alleys of karma. May that most ancient person be pleased, as a matter of fact, to forgive the transgression on our part, who did not know his glory, infatuated as we were by his Maya, reprimanding themselves constantly for not recognizing the manifestation of Sri Krishna and Balram and not giving him food when asked for. The Brahmins desperately wanted to have darshan of Sri Krishna and Balram. However, they did not dare to venture out as King Kans and his spies were still
I can't see the last line. Were still okay on the lookout for the Devaki's eighth putra, who was Kansa's nemesis. So let's see the next. Right. So they wanted to have the darshan, but they are also very much aware about this situation because Kans and his spies were on the lookout for Devaki's eighth son. Now we go to the next slide, which is the takeaways. Vimunchati yada kaman manavo manasi sthitan tarhaiva punrikaksha bhagavatvaya kalpate. O my Lord, when a human being is able to give up all the material desires in his mind, he becomes eligible to possess wealth and opulence like yours. Indriyani mana prana atma dharmo dhritirmati hi sisteja smriti satyam yashya nashyanti janmana. O my Lord, because of lusty desires from the very beginning of one's birth, the functions of one's senses, mind, life, body, religion, patience, intelligence, shyness, opulence, strength, memory, and truthfulness are vanquished. This is the conversation between Prahlad Maharaj and Narsingh Bhagwan because Narsingh Bhagwan wanted Prahlad ji to ask for a boon and Prahlad ji completely refused very politely. Oh Lord, I don't do any business with you. Please, please don't ask me for asking a boon. When the Lord insisted, Prahlad ji said, you wish to give me a boon? Oh Lord, give me a boon that I never develop a desire for a material gratification. Such amazing knowledge from Sri Prahlad ji, though he is a child. And how does he convince the Lord? He says that if we can give up our desires, then we become like you. That is what we read in Bhagavad Gita also, chapter 2, shlok number 70. Vihaya kama kaman yasar Vihaya kaman yasarvan. That particular sloka, there also the same theme is described, that once we give up the material desires, we become like God. Vihaya kaman ya sarvan pumans charti nispriyaha nirmamo nirhankaraha sashantim adhigachati. How important it is to transcend our desires. We don't have to force to quit our desires, but we have to transcend it. Because when we develop the higher taste, the taste for the lower objects automatically vanishes. That is why it is said, develop the attachment to the Lord, and then the taste that we derive, that becomes so overwhelming that the lower taste starts vanishing. That is the way to vanquish the lusty desires for wealth, fame, objects, personalities, whatever. And that is how we can transcend the desires and become God-like. Otherwise, what happens? When we keep begging for the material desires, we lose patience, we lose the strength of our senses, mind, body, religion, intellect. We lose the quality of shyness, memory, truthfulness, etc. Radhe Radhe. Now let us open up for any interactions with the participants since Yatinji is having a bad sore throat and feverish tendencies. Let's hear from any one of you and then we can conclude. Yes, Yet please. another wonderful presentation. Beautiful story about the about Krishna, Balram, the Brahmins doing yajna, and their wives who were so
who had heard about Krishna, not met him. And when they see him, they get so overtaken and mesmerized by his presence that then they decide they must have also been doing some sort of remembrance earlier, but then they get so engrossed in it that he gives them the boon. And that is just so wonderful. We just have to bear even this little story in our mind and we will progress much further. That's what I felt. Thank So you. wonderful, so wonderful. Hema ji, you would like to say something? Yes, Radhe Radhe. Radhe. The Brahmins made the mistake of not recognizing Sri Krishna. Now, in our everyday, day-to-day life, um, sometimes, we make mistakes, but at that time, we don't realize. But later on, when we introspect or, it comes to our attention, yes, I shouldn't have spoken so harshly to the nurse. She's only here to do her job. She may be overwhelmed with patients, other patients to see. But if you've realized your mistake and you go back to that person and apologize, does that still count as something good? You made a mistake, you realize, but then you've gone back to that individual and said, sorry, I didn't speak to you nicely. I apologize. The awareness afterwards comes, but in that moment, the awareness is not there because situation, the surroundings, they just take over your senses. Regardless, Right. it's like how many hours of sadhana, online lessons, reading, lectures I've listened to, but this week there was that moment. I went back and I tried to correct it. So I'm relating my experience to that, like of the Brahmins, they realized their mistake, that they didn't recognize Sri Krishna. Does that still count as something good? Yes, of course, because one of the chaupais in Ramayana says, Parahit saras sam nahi bhai, par pira nahi sam adhamai. Something like that. That giving distress to others is the most abominable act. And when we look at it from the point of bhakti, we love God, we want to reach Him. So why don't we see God in ourselves and God in every other person? So when you are seeing God in every other person, you treat that person. This person is also holding a temple of the Lord in his or her heart. So are we. We are carrying the temple of the Lord in our heart. So there is no question of being harsh or being difficult to the person because it will create that negative emotion. At the same time, what if somebody is coming to attack us for no rhyme or reason? Then the rule changes. Then it becomes, the protection. So there are different situations, but repentance is such a great weapon. Radhe Radhe. Right, Radhe Radhe, thank you. राधे राधे भैया, Radhe Radhe. सबको राधे राधे। भैया, लास्ट वीक आपने कुछ महाराज जी की कही हुई बातों को 2-3 पॉइंट्स पे बोला था सबसे लास्ट में। तो विजय भैया ने कुछ अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी कि हम सबको इसी तरह का, आपको संदर्भ याद है? नहीं एग्जैक्टली याद आ रहा है, अगर कुछ पॉइंट्स बताएं उसमें तो। कुछ ऐसा था कि कुछ लोग भगवान में विश्वास करते हैं, कुछ लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, और तो उनके साथ हम लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, कुछ इस तरह का विषय था। ध्यान है? हाँ, जैस समझ गया। हाँ, ओके ओके ओके। उस बात को तो एक ये बार फिर से समझाइए हाँ, प्लीज। याद आया। तो ये है। जी जी।
उसमें क्या है ना कि हमको 3-4 तरह के लोग मिलेंगे। तो जी जैसे अगर भगवान मिल गए या महापुरुष मिल गए, अब चैतन्य महाप्रभु किसी को मिल गए 5 वर्ष 100 वर्ष पहले अगर हम थे, तो वो मिल गए तो वो तो खुद भगवान ही है। और कोई महापुरुष मिल गए जो गुरु है, गॉड रियलाइज है, तो ऐसे पर्सनालिटीज को जब मिलते हैं तो उनके साथ हम प्रेम करते हैं। प्रेम का क्या मतलब है? विदाउट एनी कंडीशन हम उनको प्रेम करते हैं। वो हमारी परीक्षा ले, हमको कष्ट दें, फिर भी हम उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि ये भगवान है या महापुरुष है। तो फर्स्ट कैटेगरी वो हो गए। दूसरा कैटेगरी हुआ जो भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के भक्त के साथ हमें मैत्री का व्यवहार करना चाहिए। एकदम जो असल मित्र होता है, हर समय तत्पर है एक दूसरे को, उनको सहयोग करने के लिए, मित्रता जाहिर करने के लिए, वो सेकंड कैटेगरी हो गया। तीसरा कैटेगरी है जो हमसे नीचे हैं, काफी मिजरेबल स्टेट में है, और अभी उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो उन पर हमको कृपा करनी चाहिए, ग्रेस। और फोर्थ कैटेगरी वो है जो भगवान को गाली देते हैं, भगवान को नकारते हैं, नास्तिकता का प्रदर्शन करते हैं, उनको हमें उपेक्षा कर देनी चाहिए, उनके साथ झगड़ा नहीं करनी चाहिए। तो ये चारों लोग हमारे घर में भी कभी कभी रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं। पहले कैटेगरी वाले तो बहुत कम, संसार में ही इक्का दुक्का मिलते हैं, बट बाकी 3 कैटेगरी वाले बहुत मिल जाएंगे। तो उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, शायद मैंने ये बतलाया था। और एक और था कि उत्तम श्रेणी और मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी के भक्त। तो उत्तम श्रेणी के भक्त वो है जो भगवान को हर किसी में देखते हैं। आप सब्जी खरीदने गए, सब्जी वाले में भगवान को देख लिया, आपकी आवाज ना बहुत सलून में गए, हेयर ड्रेसर में भी भगवान को देख लिया, हर किसी में भगवान को देख रहे हैं, और हर वस्तु में भगवान को ब्रह्म रूप में देख भैया रहे हैं। आपकी आवाज जिनका ऐसा प्रैक्टिस हो चुका है वो उत्तम श्रेणी के भक्त, उनको तो सब कुछ भगवान में दिखता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं। तो मध्यम श्रेणी में कौन है? तो मध्यम श्रेणी में वही है जिसकी जो ये चारों कैटेगरी को इस तरह से डील करे, वो मध्यम श्रेणी के हैं। और ऑर्डिनरी कौन है? जो मंदिर गए तब उनको भगवान याद आया, फिर मंदिर से निकले तो बाकी भक्तों की सेवा करनी है या भगवान की सेवा करनी है, वो भूल जाते हैं। जी राधे राधे। जी भैया, आपकी आवाज एक्चुअली थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था। कट गई जी थी। जी जी, जो सेकंड पॉइंट बता रहे थे ना बिगिनिंग में, थोड़ा सा वो कट गया था 1 मिनट के आसपास, तो एक बार रिपीट। सेकंड पॉइंट, जी, फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट हो पॉइंट गया। ठीक था। जी जी ओके, नहीं तो सेकंड नहीं पॉइंट नहीं में मैंने भैया, जो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी आपने बताई उसके बाद बिल्कुल क्लियर नहीं था, प्लीज रिपीट करें। अच्छा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी हमने बताया, उसके बाद हमने बोला कि मध्यम श्रेणी और हाँ, और उत्तम श्रेणी और साधारण श्रेणी के कौन डिवोटीज हैं। तो जो उत्तम श्रेणी के डिवोटीज हैं वो हर किसी में भगवान को देखते हैं। थ्योरेटिकली हम सबको पता है कि हम में भगवान है, आप में भगवान है, हर किसी में भगवान है, और हर वस्तु में भी ब्रह्म के रूप में भगवान विराजमान है। लेकिन प्रैक्टिकल हम लोग नहीं वो सोचते हैं, सब्जी वाले में भगवान को देखा क्या, नाई में भगवान को देखा क्या। तो कोई किसी की प्रैक्टिस ऐसी हो जाए कि वो हर किसी में भगवान को देख रहा है, हर वस्तु में भगवान का दर्शन हो रहा है, सिया राम मैं सब जग जानी। कट गया भैया, फिर से आवाज ठीक से हेलो, नहीं राधे राधे। भैया हाँ, तो मतलब रिपीट इंटरनेट की प्रॉब्लम है लगता है। प्लीज। लेट मी ट्राई फ्रॉम माय
phone. Just 1 second. Okay. Is it clear now? अभी आवाज आ रही है? नहीं नहीं भैया, अभी भी आवाज डिस्टरबेंस हो रहा है वॉइस में। Okay, then let me try from. Now you can hear? जी भैया, अभी सही है। जी। तो स्मिता जी, आप बतलाएं क्या क्या सुना, क्या क्या अभी तक हाँ आपने समझा? हाँ भैया, जो चीज मुझे समझ में नहीं आया था अच्छी तरह, जब भी आप वही बताना चाह रहे हैं ना, तो ये आवाज डिस्टर्ब हो जा रही है सचमुच में। हाँ, तो वो तो हाँ, जी, कौन से पॉइंट आपको नहीं समझ में आया फिर से या जैसे बताइए? जो सबसे अच्छे चरित्र के होते हैं, वो लोग, अगर कोई नहीं भी भगवान में विश्वास रखता है, तो उसके बारे में भी क्या सोचते हैं, वो आप बोल रहे थे। आप फिर से बोलिए। हाँ, तो उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और साधारण श्रेणी के। तो पहले श्रेणी वाले जो हैं उनको उत्तम भक्त बोलते हैं। तो वो भक्त हैं जो हर किसी में भगवान को देखते हैं और हर वस्तु में ब्रह्म के रूप में भगवान को देखते हैं। तो हनुमान जी ने जो कहा था, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, वो स्थिति है उनकी। तो वैसे तो बहुत कम मिलेंगे। तो उनको जब कोई गाली देता हुआ भी दिखता है तो वो क्या सोचते हैं कि एक्चुअली ये बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन दुनिया को ये दिखला रहा है कि अपनी भक्ति को छुपा रहा है। उनकी ऐसी मन स्थिति होती है, किसी में वो दोष दृष्टि रखते ही नहीं है। तो वो बहुत बड़ी अवस्था है। उससे नीचे में मध्यम श्रेणी के जो भक्त हैं, वो उनमें ये क्वालिटी जो हम लोगों ने बताया, प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा, भगवान और महापुरुष से प्रेम करते हैं, भक्तों से मैत्री करते हैं, जो दुखी हैं अज्ञानी हैं उन पर कृपा करते हैं, और जो भगवान से विमुख हैं उनको उपेक्षा कर देते हैं, उनसे लड़ते नहीं हैं। जी, राधे राधे। जी भैया, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। So with those words, shall we conclude? जी भैया। अब टाइम नहीं बचा है क्या? नहीं है, मतलब हम बात कर सकते हैं। कुछ और बताइए भैया। नहीं तो आज जो हम लोगों ने जो पढ़ा। एक एक चीज जो हाँ, दिमाग में आ रही थी, वो ये हम्म, बात है कि ये श्री कृष्ण जी का जो आपने चीरहरण प्रसंग बताया, जी अ, उसमें एक जो सबसे लास्ट में आपने कहा कि जहाँ पे गोपियां हैं नदी में, चारों ओर वृक्ष हैं और भगवान और गोपी वहाँ पे अम, खड़े हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, जो भी है। उसके अलावा चारों साइड से सारे पेड़ पौधे लगे हैं, और वो हमें ये सीख देते हैं कि अगर विनम्रता होती है, तो वो इंसान या वो पेड़ पौधे और झुक जाते हैं। तो वो हमें फल देते हैं। हम उनके साथ कैसा भी व्यवहार कर रहे हैं, वो हमारे लिए हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देने वाले होते हैं। हमें फल दे रहे हैं, पत्तियाँ दे रहे हैं, छाया दे रहे हैं और फूल दे रहे हैं। लेकिन चीरहरण प्रसंग में अ, और ऐसी क्या अच्छी बात है जो इस प्रसंग का इतना ज़्यादा चर्चा होता है? क्या ये सिर्फ़ ये सिर्फ़ भगवान के इस जो आप बोलते हैं कि भगवान थोड़ा ड्रामा वाला काम कर रहे हैं,
उनका जस्ट एक लीला है जो कि मंत्रमुग्ध करने वाला है, या उनके इस तरह के चरित्र को भी दर्शाने वाला है, उस वजह से ये इतना महत्वपूर्ण बन गया है, या कोई और इसके पीछे? हाँ, ये थोड़ा डीप सब्जेक्ट है, क्योंकि सब गोपियां नग्न अवस्था में थीं और भगवान ने उनको कहा कि आप लोग बाहर आओ। तो मुझे तो ऐसा लगा कि इसमें जो शरीर के साथ जो अटैचमेंट है कि मैं नग्न हूँ और मैं भगवान से अपने आप को छुपा रही हूँ, तो उस तरह का वर्णन है कि फिर भगवान ने कहा कि आपने तो अपराध किया, कात्यायनी माता की पूजा कर रही हैं और आप वेद के अनुसार बिना वस्त्र के अगर स्नान कर रहे हैं तो वो अपराध है। तो उसको उसकी अपराध को हटाने के लिए आपको अपने हाथ को ऊपर करके, तो जो भी लज्जा शर्म जो उनको व्यथित कर रहा था, उससे उनको दिखला दिया कि आपको कोई लज्जा शर्म करने की आवश्यकता नहीं है भगवान के सामने। तो सबसे बड़ा अर्थ मेरे ख्याल से यही है, लेकिन बड़ा डीप, ये थोड़ा गंभीर सब्जेक्ट है, तो मैं थोड़ी और इसके ऊपर जानने की कोशिश करूंगा। जी भैया, थैंक यू। और किसी का अगर इसमें विचार हो तो आप लोग बतलाएं, जी भैया, वरना जी। 2 मिनट में बोलता हूँ, थोड़ा सा ठीक है। ठीक लग रहा है तो। जी। 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 अच्छा सेशन था आज का। एंड भजन स्पेशली बहुत अच्छा था। मैं गा नहीं पाया बट आई एंजॉयड इट। एंड जो इसमें एक बात जो दो चीज़ें मुझे थोड़ी सी, एक तो मुझे मतलब दो बातें मुझे एकदम की टेक अवे टाइप है मेरे लिए इसमें, इस वाले सेशन से। पहला ये जो उन्होंने कहा, जो ब्राह्मणों ने रियलाइज़ किया कि हमने कितना कुछ पढ़ा, हमने ये सारी नॉलेज ली और सब कुछ हम जानते हैं कि उसमें क्या लिखा है, क्या मीनिंग है, बट फिर भी हमसे जब एक्चुअली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का टाइम आया, जब जब टेस्ट हुआ तो हम फेल हो गए। और जब हमारी वाइफ हैं जो जिन्होंने कुछ इस तरह की फॉर्मल एजुकेशन या इस तरह का कुछ नहीं सिखाया गया, किसी ने सिखाया नहीं, और उस तरीके से आया, तो मुझे उसमें मतलब मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि जो अच्छी अच्छा माइंड होना, शार्प माइंड होना, जो रिटेन कर सकता है नॉलेज, जो पढ़ सकता है, ऐसी जगह पर पैदा होना जहाँ पर आपको प्रिविलेज मिलता है कि आप एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत अच्छे लोग आपको पढ़ाने आ रहे हैं, ये एक अच्छे कर्मों का फल मान सकते हैं इन चीज़ों को, जो आपने हमने किसी ने पहले किए होंगे जिसका फल मिल रहा है। पर अल्टीमेटली टू टू सम एक्सटेंट ऐसा भी फील होता है मुझे कि ये जो चीज़ है ये कभी कभी बिकॉज ऑफ अहंकार, कि हम सीखते हैं तो हमको लगता है कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है, हमने पढ़ लिया है, मुझे ये पूरे वेद याद हैं, मैं तो जानता हूँ सब कुछ क्या लिखा है इसके अंदर, तो वो अहंकार आ जाता है अल्टीमेटली उस चीज़ से, और वो अहंकार जो है वो क्लाउड कर देता है अल्टीमेट जो जो चीज़ होनी चाहिए थी। और ऐसे केस में मुझे ऐसा लगता है ऐसे बिलीव होता है कि ऐसा तेज दिमाग या इस तरह का चीज़ें अगर नहीं मिले इंसान को, कोई भोला सा इंसान, सीधा सा जो गांव का आदमी है, वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन में है इस केस में, ताकि वो क्लियरली फॉलो कर सकता है, उसमें किसी टाइप का किसी चीज़ का अहंकार आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। महाराज जी का एक उसमें मुझे एक स्टोरी भी याद आती है, जिसमें एक बड़े महात्मा से ब्रज का एक आदमी मिल जाता है, तो वो उनको बोलता है कि अनन्य भक्त और फनन्य भक्त। जी। तो वो कहता है कि मैं तो श्री कृष्ण के अलावा किसी और को जानता ही नहीं हूँ। तो जानता ही नहीं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जानता ही नहीं तो वो पॉइंट ही नहीं है। बाकी लोग क्या है, जानते हैं कि कितना बड़ा फैला हुआ है ये क्षेत्र और क्या क्या कौन कौन क्या है, बट फॉलो इनको करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में है कि जो जानता ही नहीं है जिसने कभी सुना ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं। तो मुझे ऐसा कभी कभी फील होता है कि जैसे अगर इस तरह के कुछ अच्छे कर्मों का इस तरह का कुछ फल मिलता है, तो वो कभी कभी डाउन प्ले भी आपको गिरा भी सकता है, बहुत बहुत सावधानी के साथ चलना पड़ता है इस चीज़ को लेकर।
तो एक तो ये चीज़ थी। आप अपना बता सकते हैं इस पे, आप क्या सोचते हैं। दूसरा मुझे ये था कि एक स्लाइड में एक पॉइंट में ये लिखा था, जो श्री कृष्ण उन ब्राह्मण की वाइफ से कहते हैं कि मुझे सामने देखने से आपका डिवोशन और नहीं बढ़ेगा। तो अब उस लेवल पे अगर कोई डिवोटी होता है तो मे बी उनको समझ में आ सकता है, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मुझे ऑप्शन मिलेगा कि श्री कृष्ण को देख सकते हो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि माइंड में मेडिटेट करके रूप ध्यान करके आपको करना है, तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि मेरे सामने रहें तो ज़्यादा अच्छा है। जी। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपने उठाया, लेकिन पहला जो प्रश्न आपने किया, अनन्य भक्ति वाली स्टोरी अगर आपको समझ में आ गई तो फिर मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। वो स्टोरी इतना इम्पोर्टेंट है कि बिल्कुल उसमें सब कुछ महाराज जी ने स्पष्ट कर जी। दिया। और यही भगवान ने बहुत एपिसोड्स में प्रूव किया कि रावण के पास सब नॉलेज था, सब कुछ ज्ञान था, लेकिन क्या भगवान वैसे पर्सनालिटीज को उनकी ग्लोरीफाई उनको ग्लोरीफाई करते हैं? नहीं करते हैं। और एक शबरी जैसी साधारण स्त्री को भगवान ने उसकी उनका जी। उद्धार किया। तो इस तरह से हम देखेंगे तो जिसके पास बहुत सामर्थ्य है, धन है, दौलत है, इंटेलिजेंस है, जैसा आपने कहा कि बहुत बढ़िया उन्होंने किया, पीएचडी किया, बड़ा बड़ा कंपनी में काम किए, सीईओ बन गए, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो एक श्लोक, एक चौपाई रामायण का हमको याद करना चाहिए कि भक्ति बिनु सब साधन कैसे, लवन बिना व्यंजन सब जैसे। अगर भक्ति नहीं है, चाहे हम सीईओ हो, चाहे हम विश्व सुंदरी हो, चाहे हम टॉप बॉलीवुड एक्टर हो, चाहे हम बहुत बड़े वेल्दी पर्सन हो, अगर भक्ति नहीं है तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा समझ लीजिए कि 56 तरह का व्यंजन बनाया लेकिन नमक देना भूल गए। भक्ति बिनु सब साधन कैसे, लवन बिना व्यंजन जब सब जैसे। तो ये तो हमको पता चल ही गया है कि भक्ति इज द अल्टीमेट। अब अगर आप सीईओ हैं और भक्ति आपके साथ है, नथिंग लाइक इट, यू हैव द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड। बट सिर्फ सीईओ है और भक्ति नहीं है, उससे अच्छा है कि भक्त है और कुछ भी नहीं है। और जी। सेकंड वाले पॉइंट का कि भगवान के समक्ष होकर, तो महाराज जी ने कई बार बोला कि आप मनगर आए, आप गुरु के गोद में बैठे रह सकते हैं, भगवान के गोद में बैठे रह सकते हैं, लेकिन अगर मन से आपने भगवान को नहीं अपनाया है तो वो गोद में बैठना निरर्थक है। जबकि आप भगवान से दूर हैं, मतलब भगवान ने अवतार लिया है, आपको दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन आपकी उत्कंठा ऐसी है कि आपके मन में भगवान बसे हुए हैं, वो भगवान को ज्यादा प्रिय है, और आपको फिर दर्शन मिल जाएगा आपको बैठे बैठे वहीं पर। क्योंकि एक स्टोरी के साथ हम लोग समाप्त करेंगे आज का सेशन की। एक मोहम्मदन ट्रेडिशन में एक स्टोरी है कि हर मुसलमान को एक बार हज के लिए जाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। उनके चार जो पिलर हैं, सलात, फितरा, हाजी, ये चार जो इस्लाम के स्तंभ हैं, तो उसमें एक है हाजी। हर मुसलमान को एक बार हज की यात्रा करनी चाहिए। तो एक ऐसा अल्लाह का बंदा था जो हज के लिए जाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं जा पाते थे। कभी पैसे का अभाव हो गया या कुछ अभाव, कुछ कमी रह गई। कई बार ऐसा हुआ कि इस बार तो चले जाएंगे, इस बार भी वो नहीं जा पाए। तो इतने व्याकुल हो गए, एक बार जब उनका हज 20 25 या 30 बार जब नहीं जा पाए, तो उस बार इतने व्याकुल हो गए कि वो बिल्कुल व्यथित होकर रुदन कर रहे हैं। तो एक हाजी आता है, मौलवी, जो हर साल हज की यात्रा करता है।
उसने उनको कहा कि आपकी जो यह व्याकुलता है ये सबसे अनोखा है। आप मेरे से, मैंने 40 बार हज की यात्रा की है, वो सबका आप उसका फल ले लो, लेकिन अपनी व्याकुलता मुझे दे दो। इस स्टोरी से आपको वो बात समझ में आ गई। जी भैया, राधे राधे। बोलिए श्रीमद सदगुरु सरकार की जय। की जय। श्रीमद युगल सरकार की की जय। जय। जय जय श्री श्री राधे। राधे। जय 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 श्री श्री राधे। राधे। जय जय श्री श्री राधे। राधे। Thank you. राधे राधे। वंडरफुल स्टोरी से आपने फिनिश किया भैया। हाँ